કાલે એક્સપ્લેન કર્યું એમાં કઈ ડાઉટ એબીસી માં? ના સર. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન રીડ કરને વિરાજ, થર્ડ. हाँ सर. A company manufactures several products of varying level of designs and models. It uses a single overhead recovery rate based on direct labor hours. The overheads incurred by the company in the first half of the year are as under: machine operation expenses 10,12,500, machine maintenance expenses 1,87,500, salaries of technical staff 6,37,500, wages and salaries of store staff 2,62,500. During this period, the company introduced activity-based costing, and the following significant activities were identified: receiving materials and components, setup of machines for production runs, quality inspection. It also determined that the machine operation and machine maintenance expenses should be apportioned between stores and production activity in 20:80 ratio. The technical staff salaries should be apportioned between machine maintenance setup and quality inspection in 30:40:30 ratio. The consumption of activities during the period under the review are as under: direct labor hours worked 40,000, production setups 2,040, material and component consignments received from suppliers 1,960, number of quality inspection carried out 1,280, direct wage rate is rupees 6 per hour. The data relating to two products manufactured by the company during the period are as under: two products P and Q, direct material cost rupees 6,000, 4,000, direct labor hours 960, 100, direct material consignment received 3822, production runs 3624, number of quality inspection done 3010, quantity produced units 15,000, 5,000. A potential customer has approached the supply of 24,000 units of components A to be delivered in a lot of 3,000 units per quarter. The job will involve initial design cost of rupees 60,000 and the manufacturer will involve the following per quarter: direct material cost 12,000, direct labor hours 300, production run 6, number of consignment of direct labors to be received 20, inspection 24. The company desires a markup of 25% on cost. The required calculate cost of product P and Q based on existing system of single overhead recovery rate. Determine the cost of production P and Q using activity-based costing. Last, compute the sales value per quarter of component K using activity-based costing system. This was past examination question. First requirement part heading zero. Statement showing total cost and cost per unit as per existing system, that is by using absorption costing method. There are two products, right? P and Q. First, P and Q, they written material or direct material? Direct material. Direct material. How much rupees is given? Sir, 6,000, 4,000. 6,000, 4,000. This is total amount is given. Direct labor, they provide the number of hours. Tell me the number of hours. 960 and 100. 960 and 100. Rate for labor hour is somewhere given. Rupees 6. Rupees 6. 960 into 6. So 5760. 5760. So 11,160, 4,600. Then we have to add overhead. So
ओवरहेड के लिए जो भी ओवरहेड का एक्सपेंस दिया है उसका टोटल करो, कितना अमाउंट आता है? So 21 lakhs. lakhs. Okay. That 21 lakh, and it is recovered based on labor hours. Somewhere 40,000 labor hours is given. Just confirm कर लो. Yes, sir. Yes, sir. So रुपीस कितना आता है यहाँ पे देखो? 2.5. 52.5. 2.5. So overhead product C, labor hours is 960 into 52.5. How much? $50,400. And here it is 100 into 52.5. 5,500. 5250, right? Yes, sir. 5,500. Now overhead as per working note number 1. $50,400 and 5250. Total cost divided by units. Cost per unit. Total units कितना दिया? 5,000, 15,000 कि 15,000, 5,000? 15,000, 5,000. पहले 15 है and second one is 5,000. Total 60 to 160. 60 to 160 divided by 15,000, 4 point something. 4.144. 144 9850 1.97. कंप्लीट कर लो, कुछ डाउट तो नहीं होगा शायद इसमें. Done, sir. विराज Done, thank you, sir. થઈ ગયું ને? ચલો.
Now, second requirement part, heading लिखो, statement showing total cost and cost per unit by using activity based costing. या आपका सेम रहेगा ना, प्राइम कॉस्ट तक कोई चेंज नहीं, ओवरहेड जो भी वर्किंग नोट नंबर लास्ट होगा वो लिख लेंगे, टोटल डिवाइड करके लिखेंगे। इतना कंप्लीट कर लो, फिर मैं आगे वर्किंग नोट स्टार्ट करता हूँ। Done? Yes, sir. विराज लखाएगी ना बेटा? हाँ सर। हाँ. Now there are two adjustment is given in the question for activity based costing. Second adjustment, I think 30-40-30 ratio is given. Adjustment read करने विराज की 30-40-30 bifurcation. थोड़ा बेव रेशियो वाला सेकंड वाड़ू कर पहला सेकंड वाड़ू सॉल्व कर. Okay sir. Sir, the technical staff salary should be apportioned between machine maintenance, setup and quality inspection in 30-40 and 30 ratio. ટેકનિકલ સ્ટાફ સેલેરી જો કેટલું છે ઓવરહેડ? Sir, આપણે 6,37,500. 637,500. Ratio is 30-40-30, right? Yes sir. And it should be divided into machine maintenance, by setup. एक सेकंड. Sorry sir. Maintenance, setup and quality inspection. Quality inspection. हाँ. So heading दे दो working note number 2. Technical staff salary and distribute कर दो ये amount. $637,500 into 30%, 191,250. 40%, 2,55,000 and rupees 1,91,250. लिख लो वर्किंग नोट 2. नेक्स्ट मशीन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस. तो यहाँ का एक एक्सपेंस तो इधर ही मैंने लिख दिया 191,250 प्लस ओरिजिनल अमाउंट इज गिवन 10 lakh समथिंग. टेल मी मशीन ऑपरेशन 10 lakh. 10,12,500. एंड नेक्स्ट वन मशीन ऑपरेशन के बाद मेंटेनेंस अमाउंट 1,87,500. This total amount should be divided in the ratio of 20-80. 20:80. 20:80 between. So between store and production activity.
So total 191,250 plus 10,12,500 plus 187,500. So 13,91,250 divided by 100 into 20. 278,250 minus 13,91,250. 11,13,000. करेक्ट? कंप्लीट कर लो. डन. हेलो. डन सर. ओके. Then next working note number 4, cost driver rate. They specified 3 activities. Tell me the first activity, name of the first activity. Sir, receiving materials and components. Receiving that is nothing but the store. Second, Sir, setup of machines for production run. एक मिनट ना. Setup for machine ना, Yes sir, for production run. for production run. Last year And quality inspection. Quality inspection. Now, working note number 2, with distribution into 3 parts, 30, 40, 30. So first 30 part, machine operation, maintenance expenses done, right? So equal to salary of technical staff. સર બોર્ડ બ્લર થઈ ગયું છે. हाँ करूँ છું. હવે ક્લિયર આવ્યું છે? નહીં ને? હા સર. ક્લિયર છે? હા. હેડિંગ, હા, હેડિંગ દઈ દો. તમે મારી સાથે જ કરો વર્કિંગ નોટ નંબર 4, cost driver rate, particular receiving material and components cost activity. Second, setup for machine for production run. Third, inspection, quality inspection. Right? Now working note number 2, first 191,250 rupees is for machine operation and maintenance. तो हमने इसको तो वर्किंग नोट नंबर 3 में मर्ज कर दिया. नेक्स्ट था 2,55,000 एंड थर्ड वन था 191,250. सो 2,55,000 किसके लिए था, जरा चेक करो वर्किंग नोट नंबर 2 में. सेटअप. दैट मीन्स दिस अमाउंट इज गोस टू सेटअप, 2,55,000. एंड लास्ट वन 191 और quality inspection में थे. So this will give us to quality inspection. So before technical staff salary या तो salary of technical staff, material receiving component कुछ नहीं, यहाँ पे 1,91,250. राइट? तो ये कहाँ से आया? तो कि वर्किंग नोट नंबर 2 से आया. मेरे साथ साथ लिख लो फर्स्ट.
then second, machine operation and maintenance, working note number 3. First, it is a store, right? Amount, tell me. 278, 250. Store is nothing but the receiving material and component. 270, 250, right? And this setup for production, 11 lakh 13,000. 13,000. Here it is nil. अब आप ओवरहेड का एक्सपेंस चेक करोगे तो पहला था मटेरियल ऑपरेशन, हमने लिख लिया, फिर था मटेरियल मेंटेनेंस लिख दिया, फिर सैलरी स्टाफ लिख दिया, इसके बाद नेक्स्ट कौन सा बच गया अभी? Wages and salaries of store staff. So wages and salary of store staff 2,62,500. 2,62,500. So it's a directly for receiving material and components, right? Take the total. This is 13,68,000. This is 191,250. Last one. Or 547.50. Good. अब हमें उसका कॉस्ट ड्राइवर दिया होगा. This total is also known as cost of activity. कॉस्ट ड्राइवर रिसीविंग मटेरियल के लिए क्या होना चाहिए, सेटअप के लिए क्या होना चाहिए, क्वालिटी इंस्पेक्शन के लिए क्या होना चाहिए, तीनों का दिया हुआ है. $1960 for material and component. 1960. Then Production setup 2040. 2040. And quality inspection 1280. 1280 डिवाइड करेंगे तो हमें कॉस्ट ड्राइवर रेट मिल जाएगा. तो 540 750 डिवाइडेड बाय 1960 275.89. Yes. Second one 13,68,000 divided by 2040 670.59. 5882 है तो 9. 191,250 divided by 1280 149.41. 41. कंप्लीट कर लो. This is called cost driver rate. Done? Yes, sir. नेहा लगाएगी बेटा? Yes, sir. Now working note number 5, calculations of overhead. अब हमारा जो मेन सॉल्यूशन वहां पे मटेरियल लेबर टोटालिटी में है, तो हम यहाँ पे भी टोटल ओवरहेड ही लेंगे.
कैलकुलेशंस ऑफ ओवरहेड। कितने प्रोडक्ट है हमारे? पी एंड क्यू 2 प्रोडक्ट है एंड कंपोनेंट के बारे में कस्टमर ने कोटेशन मांगा है, तो उनके लिए भी हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग यूज कर रहे हैं। तो वापस के लिए सेपरेट ओवरहेड की वर्किंग नोट करने से बेटर है कि हम लोग वर्किंग नोट यहाँ पे साथ में ही कर ले, राइट। नाउ फर्स्ट एक्टिविटी हमारी कौन सी है? रिसीविंग मटेरियल एंड कंपोनेंट, राइट। तो यहाँ पे लिखेंगे रिसीविंग मटेरियल एंड कंपोनेंट। क्या रेट आया था उसका फर्स्ट का? 275.89। 275.89। यहाँ पे भी हमारा आ जाएगा 275.89 एंड यहाँ पे भी रेट आ जाएगा 275.89। सेकंड हमारा कौन सा था? सेटअप था ना? यस सर। So second activity is a setup and third inspection sir, holiday inspection है कि quality inspection है? Okay, so now setup cost 671.59 671.59 correct ना? 670 670 okay. And quality inspection sir 149.41 multiplication. Now next here 670.59 into 67059 into here rupees 149.41 into 149.41 into ना हमें क्वेश्चंस के अंदर पी एंड क्यू का पहले लिख लेते हैं। क्या क्या दिया है? पी का कंसाइनमेंट रिसीव्ड कितना है? 4852 4852। फिर नेक्स्ट क्या दिया है? प्रोडक्शन 3624 So setup is 3624. Next 30 and 10 quality inspection 3010 और आगे आप देखोगे तो के का भी दिया होगा, वो भी लिख लेते हैं। 20 जे पिल्लू फर्स्ट 26 24 ओके। आप यहाँ पे अमाउंट लिख के टोटल कर लो, ये टोटल मेन सॉल्यूशन में चला जाएगा। तो मुझे फाइनल टोटल बता दो इसका, ताकि दोनों का आंसर सेम आता है ना, जस्ट चेक कर लेंगे। एंड लास्ट में राउंडिंग ऑफ कर देना इफ यू वांट। कंप्लीट कर लो, मल्टीप्लिकेशन ही है एंड एडिशन। We are complete तैयार लेके जाओ बेटा। हाँ सर।
सर P નું 41,866.26. ઇનકેટ છે 41,000 ને हाँ 41,866.26. વિરાટ નો હમણાં ટોટલ આવશે Q નું 31,934.54. 31,940 934. 934 934.54. અને 13,127.18. આ તો મને યાદ છે 13,127 વિરાટ આ જોજો બેટા કે જે વિરાટ લાસ્ટ ટોટલ કરું છું. હા તો તારું કરે કે આવ્યું કઈ નહીં આપડી કહેજે અમને હા સર મેચ થઈ ગયું બધું. મેચ ટાઈપ ને તો મેઇન સોલ્યુશન માં લખી નાખો કોસ્ટ પર યુનિટ સર P નું 3.575 અને 7.307. Q નું હા સર સેમ જ આવ્યું. કરેક્ટ હવે તમે લોકો શું કરો કોમ્પોનન્ટ કે માટે જ એને રફમાં કેલ્ક્યુલેટ કરો મને સેલ્સ વેલ્યુ અને પછી થઈ જાય એટલે મને કહો રફમાં કરજો એટલે કઈ એરર હોય તો વાંધો ના આવે
तो आंसर आज विराज। सर बीच में 1 मिनट। हाँ हाँ आराम से आराम से। सेल्स वैल्यू આવે છે 43033.98. કંઈક આગળ પાછળ લાગે છે અમાઉન્ટ. ઇનિશિયલ ડિઝાઇન કોસ્ટ was 15,000 would be it. 7500. विराज तारो रिप्लाई आंसर ये 15,000 है ना इनिशियल कॉस्ट डिजाइन. नहीं इनिशियल डिजाइन कॉस्ट 15,000 નથી. 7500. हाँ 7,500 करेक्ट आंसर. તે લેબર કોસ્ટ કેટલી લીધી મેં? હા 300 into 6. correct. So first my initial design cost order is for 24,000 units, I think, right? Yes. And cost is rupees 60,000. 60,000. So per quarter, how much quantity we have to supply? 8,000. 3,000 units. 3,000. So how much? 7,500. This is one of the way. Alternatively, you can say 24,000 divided by 3,000. So it should be 8 quarters. 60,000 divided by 8 quarters. 7,500 per quarter. Direct material 12,000. Direct labor 600. No, 300. 300 into 6. 300 into rupees 6. 1,800 and overhead 13,127, right? 127.18. हाँ ठीक है पॉइंट. वर्किंग नोट नंबर कौन सा था? 5. Yes. 7,500 plus 12,000 plus 1,800 plus 13,127. So 34,427 is the total cost. Profit 25%. 25% on cost. Cost. So 34,427 into 25%. 8607 કરી દો. 8606.75 છે તો મેં 7 કર્યું. हाँ बस तो करेक्ट કરવામાં કઈ ડિફિકલ્ટી નહીં. 43,034 कंप्लीट कर लो.
चलो हेडिंग लिख लो, स्टेटमेंट शोइंग वैल्यू पर क्वार्टर ऑफ कंपोनेंट के बाय यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। Answer. विराज कर दो। हाँ सर। Now next explanation. Generally we are setting our selling price as per the traditional concept, cost plus profit is equal to selling price. But in a modern concept, we will say first, we will determine selling price in advance. Say example, I determined my selling price of the product is 1000 rupees. So this 1000 rupees डिसाइड करते वक्त मैं कंपटीटर का प्रोडक्ट मार्केट में ऑब्जर्व करूंगा, मेरा प्रोडक्ट ऑब्जर्व करूंगा और मेरे प्रोडक्ट के फीचर्स को मैं ऑब्जर्व करूंगा और उसके बाद में ये प्राइस डिटरमाइन करने से पहले, फिक्स करने से पहले मैं सोचूंगा कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू ये पे करे सकते कि नहीं कर सकते। ये करने के बाद मेरे को जितना डिजायर प्रॉफिट चाहिए वो मैं लेस करूंगा। सपोज आई नीड डिजायर प्रॉफिट 20% ऑन सेलिंग प्राइस, दैट इज 200, तो मेरा कॉस्ट प्रोडक्ट का कितना होना चाहिए 800 रुपीज। अगर समझो मैंने लास्ट ईयर प्रोड्यूस किया हुआ है और उसका कॉस्ट है 825, तो मैं 25 रुपीज फर्दर कॉस्ट रिडक्शन करने की ट्राई करूंगा। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हम बोलते हैं टारगेट कॉस्टिंग। हम डिटेल्स में बाद में पढ़ेंगे टारगेट कॉस्टिंग, बट यहाँ पे जस्ट उसका एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन था। दिस इज कॉल्ड टारगेटेड सेलिंग प्राइस, दिस इज कॉल्ड टारगेटेड प्रॉफिट, दिस इज कॉल्ड टारगेटेड कॉस्ट, दिस इज करंट कॉस्ट और अलावेबल कॉस्ट, दिस इज कॉल्ड कॉस्ट रिडक्शन टारगेट per unit. Cost reduction means permanent decrease in cost without compromise in the quality of the product. This is a small concept, target costing. They sometimes combined with the activity based costing. Question number 4. मैं हाँ read कर question 4. Computer Limited manufactures two parts, P and Q for computer industry. P, annual production and sales of 1 lakh units at selling price of 100.05 per unit. Q, annual production and sales of 50,000 units at a selling price of rupees 150 per unit. Direct and indirect costs incurred on these two parts are as follows. PQ total, direct material cost 4,200 and 3,000. Labor cost variable 1,500 and 1,000. Direct machining cost 700 and 550. Indirect costs, machine setup cost 462, testing cost 2375, engineering cost 2250.
Note, direct machining costs represent the cost of machine capacity dedicated to the production of each product. These costs are fixed and are not expected to vary over the long run horizon. Additional information is as follows. Production batch size 1000 units, 500 units. Setup time per batch 30 hours, 36 hours. Testing time per unit 5 hours, 9 hours. Engineering cost incurred on each product 840 lakhs, 1410 lakhs. A foreign competitor has introduced product very similar to P. To maintain the company's share and profit, Computer Limited has to reduce the price to rupees 86.25. The company calls for a meeting and comes up with a proposal to change design of product P. The expected effect of new design is as follows. Direct material cost is expected to decrease by rupees 5 per unit. Labor cost is expected to decrease by rupees 2 per unit. Machine time is expected to decrease by 15 minutes. Previously, it took 3 hours to produce 1 unit of P. The machine will be dedicated to the production of new design. Setup time will be 28 hours for each setup. Time required for testing each unit will be reduced by 1 hour. Engineering cost and batch size will be unchanged. Required. Company management identifies that cost driver for machine setup cost is setup hours used in batch setting, and for testing cost is testing time. Engineering costs are assigned to products by special study. Calculate the full cost per unit of for P and Q using activity-based costing. What is the markup on full cost per unit of P? What is the target cost per unit for new design to maintain the same markup percentage on full cost per unit as it had earlier? Assume cost per unit of cost drivers for the new design remains unchanged. Will the new design achieve the cost reduction target? अभी देखो यहाँ पे हमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग कहीं पे भी नहीं पूछा है, सीधा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के बारे में बात किया है. Direct material cost rupees in 1000 is given and it is given for total 1 lakh unit for product P and 50,000 unit of product Q. Right? Machine setup cost, testing time, they specified the things. Direct machining cost is the nodes. So they said the machine cost represents the cost machine capacity dedicated to the production of each product. These costs are fixed and are not expected to vary over the long run horizon. इसका मतलब अगर मशीन टाइम रिड्यूस भी करते हम लोग 1 आवर से 30 मिनट से, तो भी मेरी कॉस्ट सेम ही रहेगी, कम नहीं होगी. तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट का हेडिंग दीजिए, स्टेटमेंट शोइंग full cost per unit of product P and Q by using activity based costing. Product P, product Q, रुपीज. डायरेक्ट मटेरियल आप लोग मेरे साथ साथ लिखते जाओ. डायरेक्ट मटेरियल 4200 है, रुपीज इन 1000 है, डिवाइडेड बाय 1 लाख क्वांटिटी करेंगे तो पर यूनिट कितना आएगा प्रोडक्ट पी का? हेलो, प्रोडक्ट पी का कितना आएगा पर यूनिट? हाँ सर. कितना हो सर? 42 and Q 3000 divided by 50,000 multiplied by 1000, तो फिर रुपीज इन 1000 कितना? 30 और 60 विराज 50,000 છે પ્રોડક્ટ सॉरी सर. Q માં. हाँ, लेबर cost 15 rupees and 20 rupees just confirm.
डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट 7 and 11 rupees. प्लीज कंफर्म करना फिगर. देन मशीन सेटअप कॉस्ट, वर्किंग नोट नंबर जो भी हम करेंगे वर्किंग. टेस्टिंग कॉस्ट वो भी वर्किंग नोट नंबर आ जाएगा. उसके बाद लास्ट वन इज इंजीनियरिंग कॉस्ट. इंजीनियरिंग कॉस्ट के लिए हमें आई थिंक स्पेसिफिकली बाइफर्केशन दिया हुआ है. 8,40,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख कितना होगा? 8.4. 8.4 and 14,10,000 divided by 50,000 28.2. 28.2. अब ये दोनों का वर्किंग नोट करने के बाद जो भी पर यूनिट आएगा, हाँ यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे तो कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा. करेक्ट है? इसमें कोई डाउट है तो बोलो यहाँ तक. नाउ रिक्वायरमेंट पार्ट 1 में लिखा है कंपनी मैनेजमेंट आइडेंटिफाई दैट कॉस्ट ड्राइवर फॉर मशीन सेटअप कॉस्ट is setup hours used in batch costing. Working note number 1, machine setup cost. So first of all, we have to find out number of batches. Product P, we are producing 1 lakh quantity. Product Q, we are producing 50,000 quantity. Now, first paragraph, I think somewhere they mention Production batch size. Production batch size. Tell me. 1,500. 1,500. So 1,500 से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ बैचेस मिलेगा कितना? 100. इसमें भी 100 आ जाएगा. Now, they specified setup time per batch is 30 hours. Machine setup time P 100 batch multiplied by I think 30 and 36. 3,600, correct? Now my cost is 4,62,000 should be distributed in this ratio. 30 and 36. Amount is 4,62,000, 30 and 36. Tell me, product P and product Q. 462 divided by 66 into 30. How much? 2,10,000. And here 2,52,000. rupees. Rupees 2.10 per unit because divided by 1 lakh, and 2,52,000 should be divided by 50,000. Rupees 5.04 per unit. So we will write here working note number 1, machine setup cost, and 2.10 and 5.04. Complete working note number 2.
વિરાજ વર્કિંગ 2 થઈ જાય એટલે મને કે 1 છે કે 2 છે? 1 છે ને, સોરી, વર્કિંગ નોટ નંબર 1. Done, sir. Done. Now working note number 2. Testing cost PQ. Testing cost is depends upon for testing cost it is testing time. So testing time is given for unit 5 and 9. So P 1 lakh units into 5 lakh. Q 50,000 into 9, 4 lakh 50,000. Right? 5 and 9 hours. Now rupees testing cost is given 2375, right? Yes. 000 and ratio 50-45. P and Q. Testing cost working note number 2. 23,75,000 into 50 divided by 95. 12,50,000. Yes. Rupees 12.5 per unit. 7,25,000. 7,25,000 divided by 7 lakh આવશે 11 lakh. 11 કીધું. ઓકે મને સાંભળવા ભૂલ થઈ. 11,25,000 divided by 50,000. 22.5 per unit. So here we will write 12.5 and 22.5. Find out per unit. $87 for P and 146.74. 146.74 and here 87 rupees, 87. right? Okay. Second part calculator per calculator on what is the markup on full cost of P. Percentage પૂછ્યું છે એમાં. What is the markup percentage based on cost for product P? 15%.
15%. વિરાટ તારે શું આવે છે આન્સર? सर 15%. 15% ને? हाँ सर. Okay, great. Sure. So, third requirement part. What is the target cost per unit for new design to maintain the same markup percentage on full cost per unit as it had earlier? Assume cost unit of cost driver for the new design remain unchanged. सेकंड का मैं प्रेजेंटेशन देता हूँ. थर्ड का कैलसी पे आंसर मुझे बताओ ना क्या हो सकता है आपके हिसाब से. थोड़ा सोचो और मुझे बताओ क्या हो सकता है. अभी जो बात चल रही है व्हाट इज टारगेट कॉस्ट पर ऑफ न्यू डिजाइन, वो प्रोडक्ट पे की बात चल रही है. क्या हो सकता है? आप आंसर ट्राई करो ना बताने. कुछ आया सेकंड थर्ड का आंसर? एक मिनट सर. हाँ आराम से. $75. 75. तारू विराज? વિરાજ શું આવ્યું આન્સર બેટા? सर ना आवड़ी वाला. ના આવડ્યો કઈ વાંધો નહીં. ટાર્ગેટેડ સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલી આપી છે? ક્વેશ્ચન માં કઈ સેલિંગ પ્રાઇસ આપી છે તને? એની જો ચેન્જ થઈ ને સેલિંગ પ્રાઇસ કઈ 86.25 तेरे को नवी कॉस्ट के जेल को. अरे हाँ प्राइस के जेल. હા તો એમાંથી તારું માર્કઅપ પર્સન્ટેજ જે તે 15 પેન્ડ આઉટ કર્યા બેઝડ ઓન કોસ્ટ લેસ કર. ओके सर समझिए. શું આવે છે મને કે આન્સર? 75. મેં હતું
આવ્યું 75? हाँ सर. Now fourth requirement part થોડું try કરો. चलो फोर्थ पार्ट आप लोग बाद में देखते हैं. हेलो, મારો અવાજ સંભળાય છે? हाँ सर. સર સ્ક્રીન બ્લર થઈ ગઈ છે પણ. હા કરું છું. હવે સ્ક્રીન પ્રોપર આવી બેટા? હવે હા સર. હવે સ્ક્રીન પ્રોપર છે? હજી બ્રાઇટનેસ કરું વધારું કઈ? બરાબર છે. બરાબર, ચલો great. Now tell me the selling price, given selling price for second requirement part. સેલિંગ પ્રાઇસ કેટલી આપી છે સેકન્ડ રિક્વાયરમેન્ટ પાર્ટ માટે? सर 86.25. नहीं नहीं, तो फोर्थ नहीं है, सेकंड रिक्वायरमेंट पार्ट आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ 100.05. हाँ. 100.05. My cost is 87 rupees, right? %, right? Third requirement part, targeted selling price
86.25 minus targeted profit, so you will get the targeted cost. Cost is 100%, profit is 15% on cost. This should be 115. So I think this is 11.25, therefore 75 rupees. सेकंड एंड थर्ड पार्ट लिख लो, फिर फोर्थ पार्ट में प्रेजेंट करता हूँ. डन. लगाएगी विराज? Yes, sir. हाँ सर. हाँ. नाउ फोर्थ रिक्वायरमेंट पार्ट. What is the new design achieve the cost reduction target? तो हमारा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कितना हो सकता है? कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अमाउंट कितना होगा? देखो हमारा टारगेट कॉस्ट 75 है और प्रीवियसली कॉस्ट आपका कितना आया हुआ था? सेकंड पार्ट में देखो आपने 87 रुपीज लिखा है. Yes. तो आपका कॉस्ट रिडक्शन टारगेट 12 रुपीज का है. न्यू डिजाइन अचीव करने के बाद 12 रुपीज रिड्यूस हुआ है कि नहीं वो चेक करना पड़ेगा. तो फोर्थ रिक्वायरमेंट पार्ट में हम लोग आइदर रिडक्शन अमाउंट फाइंड आउट करेंगे और आइदर वी विल फाइंड आउट कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट फी आफ्टर न्यू डिजाइन. तो लिखो फोर्थ का हेडिंग कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी. मैं रिपीट कर रहा हूं, कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट. फोर्थ रिक्वायरमेंट पार्ट का हेडिंग कैलकुलेशंस ऑफ कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट पी after new design. राइट. तो मेरा कॉस्ट 75 रुपीज है. अगर न्यू डिजाइन के बाद कॉस्ट पर यूनिट मेरा टारगेट कॉस्ट कितना 75. तो न्यू डिजाइन इंप्लीमेंट करने के बाद अगर मेरा कॉस्ट 75 रुपीज या तो उससे कम आता है देन मेरा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अचीव हो गया. 75 रुपीज से ज्यादा आता है दैट मीन्स मेरा कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अचीव नहीं हुआ है. तो आप फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट निकालिए और फर्स्ट रिक्वायरमेंट पार्ट में आपको सबसे पहले कौन सा कॉस्ट लिख के दिया है? डायरेक्ट मटेरियल दिया हुआ है.
सेकंड कॉस्ट कौन सा लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर। लेबर कॉस्ट। ये कितना आया था? सॉरी, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना आया था? 42 रुपीज। 42। और ये कितना था पर यूनिट लेबर कॉस्ट? 15। 15। थर्ड कॉस्ट कौन सा लिखा था? डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट, राइट? डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट कितना रुपीज? 7 रुपीज। डायरेक्ट मशीनिंग कॉस्ट के बाद कौन सा कॉस्ट है बेटा? सेटअप। मशीन सेटअप कॉस्ट कितना रुपीज है? 2.10। 2.10, ठीक है। मशीन सेटअप के बाद नेक्स्ट कौन सा है? टेस्टिंग कॉस्ट है। टेस्टिंग कॉस्ट में इंजीनियरिंग कॉस्ट। ओके, टेस्टिंग कॉस्ट एंड engineering cost. Testing cost 12 rupees 50 paisa, right? If I am not mistaken. Yes sir. Now, अब क्वेश्चन में न्यू डिजाइन के बाद इफेक्ट देखो। रिक्वायरमेंट पार्ट से पहले 6 इंफॉर्मेशन दिए, 6 इंफॉर्मेशन। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 5 रुपीज पर यूनिट। दैट मीन्स प्रीवियसली इट इज 42, 5 रुपीज डिक्रीज होगा तो कितना हो जाएगा? न्यू डिजाइन का कितना हो जाएगा? 37 बेटा। Yes sir. उसके बाद सेकंड देखो इंफॉर्मेशन क्या दिया? लेबर कॉस्ट इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय ₹2 पर यूनिट। सो 15 माइनस 2 कितना? 13। 13। नाउ मशीन टाइम इज एक्सपेक्टेड टू डिक्रीज बाय 15 मिनट। तो जितना मिनट से डिक्रीज हुआ प्रोपोर्शनेटली मेरा मशीनिंग कॉस्ट डिक्रीज होना चाहिए। बट आपको देखो एक नोट दिया था कि मशीन का कॉस्ट डिक्रीज नहीं होगा, लॉन्ग टर्म के लिए यही फिक्स हुआ है। जरा देखो ऊपर नोट दिया होगा, मिला आपको? Yes. अदरवाइज मशीन टाइम डिक्रीज हुआ तो प्रोपोर्शनेटली डिक्रीज होना चाहिए। नाउ सेटअप टाइम विल बी 28 आवर्स फॉर ईच सेटअप। तो आपका मशीन सेटअप पहले कितना था? 30 था आई थिंक, देखो तो। एंड आपका कॉस्ट ₹2 था, अभी कितना हो गया? 28 हो गया। देखो पहले 30 होगा मशीन सेटअप प्रोडक्ट पी का, मिला? Yes sir. तो 2.10 into 28 divided by 30 1.96। 1.96। उसके बाद टाइम रिक्वायर्ड फॉर टेस्टिंग ईच यूनिट इज रेड्यूस्ड बाय 1 आवर। तो पहले चेक करोगे तो 5 आवर्स था, 5 आवर्स पे आपका रुपीज है 12.5 आई थिंक, देखो तो 1 आवर्स इज रेड्यूस, दैट मीन्स नाउ न्यू टाइम इज 4 आवर्स। तो कितना रुपीज आ जाएगा? 10। इसके बाद नेक्स्ट इंजीनियरिंग कॉस्ट में कोई चेंजेस नहीं है। तो इंजीनियरिंग कॉस्ट कितना था पहले? 8.4 टोटल। $77.36। 77.36, राइट? और आपका टारगेट कॉस्ट कितना था? 75। तो टारगेट कॉस्ट अचीव नहीं हुआ, कॉस्ट रिडक्शन टारगेट अचीव नहीं हुआ। तो पहले ये लिख लो, फिर हम लोग फाइनल आंसर लिखेंगे।
વિરાજ લખાઈ જાય એટલે કે જા બેટા. થઈ ગયું સર. થઈ ગયું? ઓકે. નેહા તારું લખાઈ ગયું? हाँ सर. ओके. चलो नाउ नेक्स्ट लिखो फोर्थ का आंसर. The new design is not achieve the cost reduction target. राइट. सो इसमें किसी को कुछ डाउट कुछ पूछना है? No sir. अब इसको अल्टरनेटिवली ये फोर्थ पार्ट को कर सकते हैं. कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं अल्टरनेटिवली? कैलकुलेशंस ऑफ reduction in cost of product P after new design. Direct material reduced by 5 rupees. Direct labor reduced by 2 rupees. No change. Now मशीन सेटअप 30 था, प्रीवियसली 2 रुपीज 10 पैसा था. नाउ 28 हो गया तो मतलब 2 से डिक्रीज हो गया. तो 2.10 इंटू 2 डिवाइडेड बाय 30 0.14. टेस्टिंग कॉस्ट आई थिंक 2.5 से कम हो जाएगा. 5 आवर्स 12.5. 4 आवर्स कितना? 1 आवर्स 2.5. 2.5 and 7 9.64. राइट. एंड आपका कॉस्ट रिडक्शन टारगेट कितना है? 75 माइनस 87 12 रुपीज. तो अल्टरनेटिवली ये लिखना है तो लिख लो. Calculations of reduction in cost of product P after new design. चलो ये कैलकुलेशन के बाद सेकंड कैलकुलेशन, उसमें आपको क्या दिखाना चाहिए? कॉस्ट रिडक्शन टारगेट. तो आपका कॉस्ट रिडक्शन टारगेट 12 रुपीज है. टारगेट कॉस्ट 75, करंट कॉस्ट 87. तो कॉस्ट रिडक्शन टारगेट इज 12. ये दोनों लिख लेंगे तो मुझे बता देंगे प्लीज. લખાઈ ગયું વિરાજ? हाँ सर डन. બંને લખ્યું ને? हाँ सर. 9.64 અને 12 રૂપીસ, રાઈટ?
हाँ सर। तो लिखो लास्ट में कंक्लूजन, न्यू डिजाइन is not achieve the cost reduction target because cost reduction target is ₹12 and reduction in cost of product P after new design is ₹9.64. चलो डन। क्वेश्चन 4 में कोई डाउट नहीं है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग पढ़ो, मुझे उसमें से whether it is a traditional concept or activity based costing, prime cost per unit or in prime cost total amount remains same, तो मुझे प्रोडक्ट ए का क्वेश्चन नंबर 5, आई एम रिपीटिंग, क्वेश्चन नंबर 5 में मुझे प्रोडक्ट ए का टोटल प्राइम कॉस्ट चाहिए अमाउंट। आप दोनों कैलकुलेट करो और मुझे फाइनल आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग रीड करो, प्रोडक्ट ए का टोटल प्राइम कॉस्ट चाहिए मुझे। વિરત ખ્યાલ આવ્યો ને મેં શું પૂછ્યું? हाँ सर। હા, આન્સર આવે એટલે કે મેં આન્સર આવે એટલે કે બેટા મને
કેટલું આવે છે આન્સર મેં? હા, સર તમે પ્રાઇમ કોસ્ટ ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું ને? અરે 3 લાખ રૂપિયા, ટોટલ 3 lakhs. એ પ્રોડક્ટ કેટલું? 3 લાખ પ્રોડક્ટ એનું. રોંગ છે. તારું કેટલું આવ્યું મેં? હા, મને 25,000 ઇન્ટુ કરવું હોત તો હું તને પૂછત જ નહીં ને વિરાજ. પણ સર અમે ડાયરેક્ટ આપ્યું છે ને પ્રાઇમ કોસ્ટ પર યુનિટ કરીને લખ્યું હતું આપણને. પણ મને એ કરવું હોય તો હું તને પૂછત જ નહીં ને. સવારે તો ખબર છે. એક જ મિનિટ સર. એડજસ્ટમેન્ટ વાત ધ્યાનથી. ગ્રોસ પ્રોડક્શન 302,400. 302,400. તારું પેલા 3 lakhs આવ્યું હતું. હા, બરોબર ને મેં? હા, તે પેલા 3 lakhs જ કર્યું હતું ને? ના સર, એકચ્યુઅલી હું કન્ફ્યુઝ થઈ ગઈ હતી. અચ્છા અચ્છા, ઓકે. વિરાજ શું આવશે જો? તો સર આપણે ગ્રોસ કન્સિડર કરશું, મતલબ નેટ ગ્રોસ કરવું પડે ને. શું કામ? કારણ કે ડિફેક્ટિવ તો સેલ જ નહીં થાય ને ભાઈ. કોસ્ટ બેર કરવી પડશે પણ ડિફેક્ટિવ સેલ નહીં થાય ને. પણ આપણે જે પ્રોડક્ટનું પ્રોડક્શન તો પૂરાનું પ્રોડક્શન થઈ જાય છે ને. પ્રોડક્શન 2520 યુનિટ્સ કરીશ ત્યારે તું 2500 સેલ કરી શકીશ ને બેટા. ઓકે, સમજી ગયો. નેટ પ્રોડક્શન. તો સેલ થયું, નેટ થયું ને. ઓકે સર, સમજી સર. ચલો, સો ફિફ્થ રિક્વાયરમેન્ટ પાર્ટમાં હેડિંગ લખો, સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પ્રોફિટેબિલિટી એઝ પર absorption costing method. આજે ફ્રાઈડે ને, કાલે સેટરડે આપણે ટોપિક વાઇન્ડ અપ કરશું. મંડે ના ન્યૂ ટોપિક. Heading આપ્યું સ્ટેટમેન્ટ શોઈંગ પ્રોફિટેબિલિટી એઝ પર absorption costing method. Particular product ABC statement showing profitability as per absorption costing. Product A, B, C. Sales. Selling price into sold quantity 25,000 into 18 rupees. कितना होगा मुझे बताओ अमाउंट प्लीज. सर 4,50,000. 4,50,000. Product B. सर 7,84,000. Product C. 3,24,000. Minus prime cost. Working note number 1. આનું કેટલું આવ્યું હતું? 3,02,400, right? પ્રોડક્ટ બી નું કેલ્સી પર આપણે કેલ્ક્યુલેટ કરશું તો સોલ્ડ ક્વોન્ટિટી કેટલી? 56 છે ને.
પ્રોડક્ટ બી કેટલો આવશે 5,05,800 આવશે જરા ચેક કરો તો કેલ્સી પર વર્કિંગ નોટ પછી કરીએ प्लीज कंफर्म करो प्रोडक्ट बी का प्राइम कॉस्ट कैलकुलेट करके कैलसी पे हाँ सर 505,800. देन प्रोडक्ट सी કેટલું છે 8 રૂપીસ છે ને ફોર हाँ सर 2,16,720. 216,720. हेलो मैं आ संभळाय છે તને हाँ सर. हाँ सर હા હા પ્રોડક્ટ સી નું કેટલું આવ્યું જો ને हाँ सर ये चेक करेक्ट है કરેક્ટ છે ને हाँ 4,50,000 minus 302,400 147,600 784,000 minus 505,800 2,78,200 gross margin minus overhead working note number 2 profit कंप्लीट कर लो फिर जो भी ओवरहेड आएगा हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे माइनस करके जो भी आएगा दैट इज प्रॉफिट डन सर नाउ लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 कैलकुलेशन ऑफ प्राइम कॉस्ट working note number 1 calculations of prime cost product ABC sold quantity 25,000 56,000 and 27 divided by net production is 2500 right हाँ सर 2520 minus 20 so number of production run 10 into gross production 2520 gross production total
production quantity 25200 multiplied by prime cost per unit. Prime cost કેટલું છે per unit? 12, 18, 12,998. 12. So prime cost 3,04,200. ये नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन मुझे आगे काम आएगा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में ओवरहेड के लिए, तो इसके लिए मैंने इस हिसाब से कैलकुलेट किया। बी एंड सी का भी आप ऐसा ही कैलकुलेट करके कंप्लीट कर दो वर्किंग नोट। चलो डन, वर्किंग हो गया। Yes, sir. वर्किंग नोट नंबर 2, ओवरहेड। સર તમારો વિડિયો નથી આવતો. ટોટલ અમાઉન્ટ કરો, વિડિયો નથી આવતો? હા ખબર નહીં. હા હવે આવ્યો? ના સર. હવે સર તમારો નેટવર્ક નો બતાડી. મોબાઈલ ડેટા તો ઓન છે, નેટવર્ક નથી બતાડતો? હા સર લગે નેટવર્ક બેન્ડવિડ્થ લો છે તમારી. એ કેવી રીતે ખ્યાલ આવે તમને ત્યાંથી? સર લખેલું જ છે એ તમારે આપણે મારા સ્ક્રીન પર. અચ્છા લખેલું આવે? હા સર. એક જ મિનિટ ચાલુ રાખ।
હાલો, હજી એ નથી આવતું. હજી એ નથી આવતું. વેઇટ ફોર 2 મિનિટ્સ. હજી એ હજી ઇન્સ્યોરન્સ સર હવે આવ્યું, બોર્ડ દેખાય છે હવે તમારું. દેખાય છે ને? હા. પણ ઇન્ટરનેટ મારું અહીંયા લો હોય તો મને કેમ ખ્યાલ ના આવે મારા ડિવાઇસ પરથી, મોબાઈલ પરથી? નથી ખબર મને, કેમ કે સર એ લખીને આવે કે સર તમારું નેટવર્ક બેન્ડવિડ્થ લો છે એમ કરીને અમારા સ્ક્રીન. અચ્છા અચ્છા. તું શેમાં લેપટોપ પર કરે છે કે? લેપટોપ પર સર. કદાચ એમાં એડિશનલ ફીચર હશે, આમાં મોબાઈલ પર નથી આવતું. હું મોબાઈલ પર ચાલુ છે મારું. ચલો હવે દેખાય છે વ્હાઇટબોર્ડ? હાલો, સર પાછું જતું રહ્યું. પાછું જતું રહ્યું. 2 મિનિટ ચાલુ રાખ. આવે તો મને કહેજે, હું બીજું ડિવાઇસ. સર તમે એવો તો બહાર જઈને અંદર આવી શકો પાછા? હે? બહાર જઈને તમે એક્ઝિટ કરી પાછા અંદર આવો તો? હા, હું એવું જ વિચારું છું. નેહાને હોસ્ટ બનાવવા દે. એટલે મને લીવ નો ઓપ્શન બતાવ. હા સર. હવે વાઇડ છે હવે. હવે દેખાય છે તમને લોકોને? સર વ્હાઇટ બોર્ડ નથી દેખાતું, ઓલી વ્હાઇટ સ્ક્રીન જ દેખાય ઓલી બાર વાળી. હજી નથી દેખાતું બેટા? ના સર હજી નથી દેખાતું. 2 મિનિટ વેઇટ કરો, મારે કરવું હવે બીજા મોબાઈલ. મેહા તને દેખાય છે સરની સ્ક્રીન?
બ્લર દેખાય છે પણ બરાબર દેખાય છે, આવજા કરે છે. પેલું બ્લર સમી હેંગ થયેલી દેખાય છે, મને હેંગ થયેલું હોય ને એવી સ્ક્રીન દેખાય છે. બંનેમાં બેન્ડવિડ્થ ઇઝ લો જ આવે છે. અચ્છા, મારી પાસે બીજું બી નેટવર્ક છે પણ હવે એમાં બી સેમ જ ઇશ્યુ આવે છે. તો પછી જોઈએ ભાઈ. હવે જો જે એરટેલ નેટવર્ક બેન્ડવિડ્થ ઇઝ લો દેખાડે છે. આપણે 5 મિનિટનો બ્રેક. હા, એક કામ મિનિટનો બ્રેક પાછા બધા રીએન્ટર કરીએ, જોઈએ શું થાય છે. ઓકે સર.